A very good evening to all my dear friends. Once again, welcome to Try Academy and welcome to the 8th session on RCC, in which we are going to cover analysis of singly reinforced beam. Okay, तो 8वां लेक्चर है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को, ठीक है। एक्चुअली ये लेक्चर कल शेड्यूल किया था, बट कल एज यू नो कि लेक्चर प्रॉपरली चल नहीं रहा था, तो हमने इसको आज रीशेड्यूल मारा है। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए, तो डियर, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त ऐश्वर्य। गेट ESE SSC JE AE के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके, मास्टर्स मेरा IIT दिल्ली से है, बीटेक जामिया कॉलेज से है। 4 times आई हैव क्वालिफाइड गेट विद माई बेस्ट AIR 226। 8 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 सालों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मेरे पास। एंड आई वॉज ऑल्सो द एक्स एजुकेटर एट अन अकेडमी। मई 2020 से जनवरी 20 यहाँ पे सर्व किया, ठीक है। अगर अब बात करें इस टेलीग्राम ग्रुप की, तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये चैनल, ये ग्रुप आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलते हैं डेली नोट्स, अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन, ठीक है। नोट्स आपको सेशन ख़त्म होते ही मिल जाता है, यूट्यूब नोट्स। डाउट क्लियरिंग भी आपकी इसके अंदर चलती है। डाउट क्लियरिंग सेशन से भी हम प्लान करेंगे, बट जो भी आपके डाउट्स हैं आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। एंड इट इज़ द कॉमन ग्रुप फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। ओके, तो चलिए डियर करते हैं स्टार्ट। और ये है हम सिलेबस पे, एंड सो फार वी हैव कंप्लीटेड दीज 3 टॉपिक्स। और चल रहा है अभी हमारा LSM में डिस्कस करेंगे अभी हम फ्लेक्सर। और आज हम बात करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है स्ट्रेस ब्लॉक। स्ट्रेस ब्लॉक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, ठीक है। आई होप दी ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है। तो फ्लेक्सर चलेगा अभी सिंगली आज करेंगे, फिर कल न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, फिर उसके बाद डब्ल्यू पे आएंगे, देन टी सेक्शन, उसके बाद वी विल बी जम्प टू शेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है ये, ठीक है डियर। और चलो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। रेफरेंसेस मैं आपको बताता रहता हूँ। यूनि कृष्णन पिल्लई एंड देवदास मेनन, BC पुनिया, एंड कोड विच यू हैव टू यूज इज IS 456,000, कोड बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड। ओके, रिवीजन ये थी कि लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रेस ब्लॉक करवाया था, स्ट्रेस ब्लॉक, और स्ट्रेस ब्लॉक के जो भी आउटकम थे, परसों लेक्चर शेड्यूल हुआ था तो वो मैंने आपको लाके बता दिए। रेक्टेंगुलर जोन 3/7, पैराबोलिक जोन 4/7, it is 4/7, पैराबोलिक जोन इज 4/7। ओके, इस लेवल पे स्ट्रेन, रेक्टेंगल और पैराबोला का जो ट्रांजिशन है, यहाँ पे स्ट्रेन कितना होता है 0.2% और 0.0020। ओके, नेट कंप्रेसिव फोर्स ये हमने डेराइव किया था 0.36 FCKB इंटू XU। नेट टेंसाइल फोर्स 0.87 FY इंटू AST। लीवर आर्म फैक्टर भी हमने देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड कि एक कंप्रेसिव फोर्स भाई लग कहाँ पे रहा है। It was acting at a distance of 0.42 XU from topmost compression fiber, and if this is 0.42 XU and it was passing through this rectangular zone, because this rectangular zone is 3/7 and this 3/7 is 0.428 or approximately 0.43, and 0.42 is less than 0.43. So if somebody asks you from where this resultant compressive force is going to pass, you have to say that it will be going to pass through रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ओके, ठीक है। अगर ये कंप्रेसिव फोर्स 0.42 XU पे लग रहा है फ्रॉम टॉप मोस्ट फाइबर, देन लीवर आर्म इज D minus 0.42 ऑफ XU। ओके, so all this information are going to be very very helpful especially in today's session, ठीक है। तो सब कुछ सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अभी तक जो पढ़ाया है, जो आपके शुरू के 7 लेक्चर में क्लियर किया है, किसी को भी कोई डाउट? टेल मी गाइस। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। एंड टॉपिक एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। क्या होता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम? वी ऑल नो, इनफैक्ट स्ट्रेस ब्लॉक में ही हमने कहीं ना कहीं
सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को समझ लिया था। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वो बीम्स होते हैं जहां पे आपका जो स्टील होता है वो हम एक ही साइड डालते हैं, सिंगल साइड डालते हैं, और सिंगल साइड इज बाय डिफॉल्ट द टेंसाइल साइड. Whenever we are going to place steel on one side, obviously that side is going to resist tension, because as we all know, concrete is not great in tension, it is weak in tension. Yeah, yes, it is good in compression. So whenever we are going to provide reinforcement or steel on one side, then obviously it is tension side. Tension side, like in case of simply supported beam, it is below to the neutral axis whenever is loading to is coming from up to down. Okay, so थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ सिंगली और डबली में क्या होता है. इफ दिस इज योर बीम, let it be simply supported beam, then you are going to place your steel somewhere here. एकदम बाहर नहीं प्रोवाइड करोगे बिकॉज इट में सब्जेक्ट थ्रू क्रोजन. ठीक है, एंड फॉर नॉर्मल लोडिंग below the neutral axis, below the neutral axis, below this longitudinal axis, tension will occur. Okay, so we are going to provide steel here, we are going to provide steel on the downside direction. ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, इसको क्रॉस सेक्शन में दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा? इसको क्रॉस सेक्शन में दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा डियर? This is B, this is D. This is B, this is D. And this is area of steel. There can be multiple bars. This is AST. A, area of steel. T stands for tension. It is area of steel in tension. ऐसे भी केसेस आएंगे. हेलो, वेलकम अमित. ऐसे भी केसेस आएंगे व्हेन यू हैव टू गो फॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम, और हमने पढ़ना है. इनफैक्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम मोस्ट प्रोबेबली परसों स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ पे आपका जो स्टील रहेगा दैट वुड बी ऑन कंप्रेशन साइड एज वेल. तो ऐसे सेक्शंस को वी आर गोइंग टू कॉल डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन. ठीक है, और क्यों कंप्रेसिव साइड पे भी स्टील देंगे हम लोग, इसकी बात हम करेंगे, बट वो डबली के अंदर कवर करेंगे. तो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन ASC, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST. so this is how we are going to assign the naming. okay, but फिलहाल जो टॉपिक है उसी पे रहते हैं. टॉपिक इज analysis of singly reinforced beam. so this is your singly reinforced beam. okay, and we also know from topmost compression fiber to CG of the steel reinforcement, this distance remains effective in our analysis. okay, so this depth is also known as effective depth. This D is also known as effective depth. so B is width, or you can say overall width. D is again your depth, or you can say overall depth. But small d is going to call effective depth, is going to call effective. Amit, which part you want me to repeat? कौन सा पार्ट रिपीट करना चाहते हो सिंगली डबली में? अभी बस मैंने ये बताया डियर कि what is singly reinforced beam and what is doubly reinforced beam. if we are going to provide steel on a single side, on one side, then the beam is known as singly reinforced. okay, singly reinforced मतलब ये नहीं कि single सरिया, it means on one side. actually this part is in tension, this part is in compression. तो अगर स्टील आप प्रोवाइड करोगे then first of all you are going to provide it at the tension side. so if you are going to provide steel only on tension side, then it is known as singly reinforced beam. if you are going to provide steel on tension as well as compressive side, then it is known as doubly reinforced beam. and why we have to provide steel in compression side? for that
we are going to discuss it separately. That we are going to discuss separately under the heading of doubly reinforced beam. Okay, but singly reinforced beam, steel is going to be provided only on one side, and that side is tension side. And tension side may be below to the neutral axis, or it may be above to the neutral axis. Suppose had this been the case of cantilever beam, then what is happening in the cantilever beam? In cantilever beam, due to the downward loading up to the neutral axis, there is tension, and below to the neutral axis there is compression. क्या हो गया? एक मिनट जरा होल्ड कीजिए. Okay. आ रहा है आवाज? हाँ ठीक है. So this time this phase is in tension and this phase is in compression, and this is going to be longitudinal axis, and this is neutral axis. So here, if you are going to provide steel in cantilever beam, then obviously you have to provide it on single side, and it must be here. Steel must be here. Okay, for normal loading. So single reinforce means you are going to provide steel only in one cross section. ठीक है. अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा बनेगा. Let's suppose it is B. Let's suppose it is D. And this is the area of steel, and here the effective depth you are going to measure from the outermost compression fiber, and here the compression fiber is downward. Is it clear? ठीक है. सर सिंगली और डबली अलग अलग क्यों यूज करते हैं? नहीं, डबली क्यों यूज करते हैं इसका रीजन तो डियर अब डबली में डिस्कस करेंगे डियर अमित, है ना. ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना. आई थिंक परसों हम लोग डबली स्टार्ट कर देंगे. कल एक न्यूमेरिकल सेशन के बाद परसों डबली स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, वो हम परसों डिस्कस कर लेंगे कि डबली क्यों यूज़ करते हैं. अलग अलग क्या कि अगर सिंगल साइड रिइंफोर्समेंट देने से काम हमारा बन रहा है, डिजाइनिंग हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट ऑन वन साइड ओनली. बट वाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम ऑन बोथ साइड, दैट वी नीड टू फिगर इट आउट. ओके. So analysis of singly reinforced beam can be done in by using these four cases. Okay. पहला step calculation of limiting depth of neutral axis. दूसरा step calculation of actual depth of neutral axis. तीसरा step है we have to compare between limiting and actual depth of neutral axis. And fourth step is the calculation of moment of resistance, or you can say the maximum safe load. ठीक है डियर. तो ये चार स्टेप में वी विल बी कंप्लीटिंग एंटायर एनालिसिस. तो आज का मेन मोटिव है डिस्कशन ऑन एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम. अभी तक मैं आपको बता रहा था बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, दैट सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम मींस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड स्टील ओनली ऑन वन साइड, एंड ऑब्वियसली दैट साइड इज टेंशन साइड, एंड नोटेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील in that side is AST. Okay, and the single side may be down to this longitudinal axis or upside of this longitudinal axis depending upon the nature of beam as well as nature of loading. For simply supported beam, for downward loading, obviously the below neutral longitudinal axis the tension zone, and upside longitudinal axis it is a compression zone. So we need to provide steel on one side, so that side is tension side, and most tensed fiber is outermost fiber, but we cannot provide steel at the outermost fiber because it will be exposed to climate, moisture, and the steel will get corroded. So we need to provide some minimum cover. So this is known as also D dash. It is also known as cover, effective cover. So outermost tension fiber to CG of the steel reinforcement is known as effective cover. ये भी लिख लो. It is known as effective
पावर। नहीं, इकोनॉमिकल करने के लिए नहीं, इकोनॉमिकल करने के लिए नहीं, बस अब इतना समझ लो, डब्ल्यू इसलिए देते हैं डियर कि गिवन साइज का बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, अगर आप बीम के डायमेंशंस नहीं बढ़ा सकते हो, ग्रेड नहीं बढ़ा सकते हो, तो स्टिल यू हैव टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देन यू हैव टू प्रोवाइड इट ऑन द कंप्रेशन साइड एज वेल। ओके, डिस्कशन करेंगे अमित, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास एनालिसिस के लिए। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। Third one is the comparison between actual and limiting, and we will be deciding what type of beam it is. And fourth is calculation of moment of resistance or maximum safe load. Okay, so first one is step number 1 says calculation of limiting depth of neutral axis. What is limiting depth of neutral axis? Do you remember the 6th assumption of LSM? What does the 6th assumption of LSM said? What does it say? Tell me. It says at the time of collapse, strain in the steel, tensile steel, should be greater than or equal to this. But limiting depth of neutral axis is such a depth of neutral axis when strain at the outermost compression fiber is 0.0035 and strain at this steel, it is not equal to greater than equal to, it is simply equal to 0.0020. This should be greater than equal to, okay, it can be greater than equal to, but when it is equal to this one, and in concrete at the time of collapse it is fixed, it is 0.0035. So such a depth is known as limiting depth. If this strain is less than or greater than this particular value, then we can get them as per the actual value of neutral axis. Yes, singly के लिए, है ना? But when strains are fixed, means at the level of steel it is this one, at the level of concrete, outermost concrete it is this one. So such a depth is known as limiting depth of neutral axis. Okay. So obviously if that thing is fixed, that strain यहाँ पे collapse के वक्त इतना ही होगा और strain concrete के वक्त इतना ही होगा, तो आप similar triangle का use कर सकते हो डियर। यहाँ पे you can use the concept of similar triangle in order to find the value of axial limb. In order to find the value of axial limb, what is this distance? It is d minus axial limb. Okay. So if I am going to apply similar triangle, then I know this is d minus axial limb. It is d minus axial limb. Then what can I write? Suppose this is O, this is A, this is B, this is C, this is D. So let me take these two triangles OAB and OCD. So in these two triangles, I can write 0.0035 upon axial limb. This is equal to 0.0020 plus 0.87 Fy upon ES. Okay, so this I can write. Okay, upon obviously d minus axial limb. Now cross multiply it, you will be getting what? D minus axial limb upon axial limb is equal to 0.0020 plus 0.87 Fy upon ES divided by 0.00. Now it is d by axial limb minus 1 is equal to 20 by 35, 4 by 7 plus, put the value of ES. Value of ES, what is the Young's modulus of steel? It is constant. ES is always 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. So on substituting this value, you would be getting 0.87 Fy divided by 2 into 10 to the power 5
into 0.0035. Further on solving it, I can write this minus 1 will, when it will go there, it will be 11 by 7. So d by xu lim इज इक्वल टू, जब ये माइनस 1 यहाँ पे जाएगा तो 11/7 हो जाएगा, 11 by 7 प्लस 0.87 fy and this 35 into 2 7 only, so it is 700. So here you can write d over xu lim is equal to 700, 1100 plus 0.87 fy. So my dear friend, xu lim here is how much? Anybody? It is 700 upon 1100 plus 0.87 fy to d. तो इस एक्सप्रेशन से क्या लर्निंग आपको मिलती है? इस एक्सप्रेशन से आपको क्या लर्निंग मिलती है? एनीबॉडी? इस एक्सप्रेशन से आपको क्या लर्निंग मिलती है? In this expression you can see that the limiting depth of neutral axis, which is obviously depending upon the strain value at the time of collapse, this is the only function of grade of steel. This is the only function of grade of steel. Please note it down. Limiting depth of neutral axis is the only function of grade of steel, my dear friends. And broadly we are going to use only 3 types of steel in our RCC, WSM and LSM. That is, एक तो आप FE 250 यूज कर लोगे, एक आप FE 415 यूज कर लोगे, एक आप FE 500 यूज कर लोगे. तो बेसिकली ये तीन ही तरीके की स्टील आप मेजोरिटी में यूज करते हो. And if you are going to place this value 250, 415 and 500, you would be getting the value of axial limb as axial limb होगा आपके पास 0.53d. अगर आप यूज करते हो fy की जगह 250, it would be 0.48d if we are using fy की जगह 415, and if in place of fy if we are using fe 500 value, then you would be getting axial limb as 0.460. You can see that here as well axial limb, sorry, why I am saying as well, we haven't studied WSM. It is 0.48d and it is 0.46d. तो ये है हमारे मेरे पास FE माइल्ड स्टील के केस में, ये है मेरा HYSD 415, ये है मेरा HYSD 500. So these three are the important values which we can generally learn. Okay, ठीक है, learn करो, but make sure you are also familiar with the assumption. तो ये वैल्यू आपको तब मिलती है 0.53, 0.48 and 0.46 when you are going to use this strain diagram. There are instances in GATE when they have said instead of 0.0035 the revised strain at the time of collapse is found to be 0.0025. Now calculate the limiting depth of neutral axis. So you should not by heart without knowing the logic. आपको पता होना चाहिए वैल्यू आई कैसे. ये वैल्यू आई स्ट्रेन के लिमिटिंग वैल्यू from the concept of similar triangle. When you have set the value of strain at the time of collapse of concrete as well as at the time of steel at the steel level. So by using the concept of similar triangle you have used this. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है. एक बार 0.0035 को 0.0025 कर दिया गया था और आपसे पूछा गया था axial limb. So you should know this. Okay, so we can conclude here that this is xu, this is b minus xu. बड़े शांत बैठे हो आप लोग. अरे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? बड़े शांत बैठे हो आज. So this we have just seen and ये हमने derive किया है.
बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेन। ठीक है, चलो। और ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि दिस वैल्यू ऑफ एक्सियलिम इज ओनली अ फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, इज ओनली अ फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, है ना। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा हुआ है, वो भी गेट के, that the limiting value of neutral axis or the balance depth of neutral axis depends on grade of steel, grade of concrete, both, none of these। तो आंसर क्या आएगा? इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो जस्ट नाउ वी हैव सीन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। So now it's time to go through second step, which says calculation of actual depth of neutral axis। कभी भी आपको अपने इंजीनियरिंग में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना हो, then you can do a very common task। Simply equate your compressive forces with the tensile force। चाहे आप प्लास्टिक की बात कर लो, चाहे आप वर्किंग स्ट्रेस की भी बात कर लो, चाहे आप लिमिट स्टेट की बात कर लो, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जो न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके ऊपर के फोर्सेस, उसके नीचे के फोर्सेस बैलेंस है। मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस हैव टू बी सेम। ओके, कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस हैव टू बी। दिस इज अ की कंसेप्ट टू फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है, टेंसाइल फोर्सेस कितने होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड in stress block study। So just for revision, let me tell you, if this is the overall depth D, if this is the overall width B, if this is the effective depth D, if this is your neutral axis, if this is my neutral axis, okay, the graph is parabolic then rectangular, okay, it is 4/7, it is 3/7, and this is 0.36 FCKB into XU। It is the net compressive force, it is the net tensile force। Then how you are going to get the actual depth of neutral axis? It is 0.36 FCKB into XU is equal to 0.87 FY into AST। भाई आपको AST दे रखा होगा, आपको ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है, आपको विड्थ दे रखी होगी, then can't you find the actual depth of neutral axis? Similarly, you can say that actual depth of neutral axis can be equated and calculated like okay, or it can also be written as ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। What is 0.87 upon 0.36? What is 0.87 upon 0.36? Is 2.42 FI over FC AST over multiply and divided by D। Why I am doing this? Because this is also known as percentage fraction. This is also known as percentage fraction। So XU is 2.42 FI over FCK P dash। So area of steel with respect to effective cross section is known as percentage fraction or percentage of steel। Okay, तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टील आपको दे रखा हो, उसका फ्रैक्शन दे रखा हो, स्टिल यू गाइस कैन कैलकुलेट ठीक है एक्सयू, स्टिल यू गाइस कैन कैलकुलेट एक्सयू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड? ठीक है,
Okay, so this is the step number 2, calculation of actual depth of neutral axis. And you know, actual depth of neutral axis is the real depth. It is that depth which your cross section is having depending upon the percentage of steel, depending upon the area of steel. It may or may not match with the limiting depth, although limiting depth is just like your ideal depth. Percentage fraction means, dear, suppose if you want to calculate percentage of steel, what is percentage of steel with respect to this cross section? Percentage of steel with respect to this cross section is how much? It is area of steel with respect to overall cross section. But in place of this overall cross section, if you are using effective, then it is known as the percentage. And fraction means that you are removing this 100, like 1% is 1 by 100 or 1% is 0.01. So 0.01, 1% is 1, or fraction of 1% is 1 by 100 means 0.01. So percentage fraction of 1% is 0.01 and percentage it is 1 only. Okay, so P A dash is percentage fraction. Simply remove this 100, it is AST upon PD. If somebody is asking you that percentage fraction is 0.03, it means percentage of steel is 3%. That's all. Is it clear, dear? Okay, so in terms of percentage fraction, D, Fy, Fck is given to you, then Xu you can also compute. Now Xu can be equal to limiting or it cannot be equal to limiting. Xu depends upon the real value or given value of area of steel, whereas Xu lim value is the ideal depth of neutral axis, and it has been calculated by equating the strain at the time of collapse, and we know at the time of collapse strain values are fixed. So based on that, if you are calculating actual depth of neutral axis, then such a depth is known as limiting depth of neutral axis. Actually you can say none of the material is going to waste. Steel and concrete are going to fail simultaneously. Steel and concrete are going to fail simultaneously, dear. Okay. Okay, now comparison. If Xu, after the calculation of Xu and Xu lim, we can say that there can be built up total 3 cases. Xu can be less than Xu lim, or case 2, Xu can be equal to Xu lim, or case 3, Xu it can be greater than Xu lim, है ना. तो ये 2-3 केसेस, ये 3 केसेस हम लोग बना सकते हैं आफ्टर कंपेयरिंग दी Xu एंड Xu lim. ठीक है, थोड़ी इसको समझाता हूँ विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम. लेट मी एक्सजरेट केस नंबर 1. पहले मैं केस नंबर 1 आपको समझा दूँ. So I have drawn this diagram for you guys. I hope it is clear. See, this blue wali line is the actual depth of neutral axis. This is your actual depth of neutral axis, and this red wali line is your limiting depth of neutral axis. So this is limiting depth and this is actual depth, and here the actual depth is less than limiting depth, as we are seeing case number 1. So this section is known as under reinforced section. This section is known as under reinforced section. What is the outcoming of this under reinforced section? Here Xu is less than Xu lim. Okay, at the time of collapse, strain here is this much, but at the time of collapse, strain in the steel is greater than this. Okay, means you can say steel is in lesser as compared to the quantity of concrete. Steel जो है वो कम पड़ गया, ठीक है, because here the strain values are more here, and if this is actual, then stress strain curve will this stress curve
always to be made with respect to actual neutral axis. So if this is actual neutral axis, then graph will start from here, because only this much contribution will be there in compressive side. So first of all, graph is parabolic, then it will become rectangular, and this force to be calculated based on this value, and ultimately XU value is less, so there is a reduction in the value of compressive force. Note that economical section. So this is the compressive force, this is the compressive force, this is the tensile force, this is the compressive force, and this is the tensile force. Okay, this is first case when XU is less than XU lim. You can see if it would have been a limiting section, then this much percentage would have been more consumed in an effective manner, but instead of this, only this much is being consumed, means it is not that efficient section. So if somebody asks you which is the most efficient section, then you can say it is the limiting section. Okay. Now after that, there is a second case when XU and XU limiting are same. So in this case, my dear friend, both XU and XU lim are same. So it doesn't matter whether you are talking about actual or limiting, they both have to come same. So here this strain value is equal to this, here this strain value is equal to this. So just now in step number 1, we have used this scenario in order to calculate the actual depth of neutral axis. If actual depth of neutral axis, limiting depth of neutral axis, but if actual depth of neutral axis comes equal to limiting depth of neutral axis, or whenever we are doing design, we kept XU is equal to XU lim. So in such scenario, these figures are to be used. Here you can see that compressive forces are have been increased because more utilization of the concrete here. In fact, we can say concrete is going to utilize at its full level. Okay, so this is 0.36 FCKB into XU, and this is 0.87 FY into AST. So rest of the things can be done further. But the thing is, you can even allow under reinforced section, because strain can be greater than this. You can even allow balance section or limiting section. But this third case you cannot allow in LSM. You know why? कोई बताएगा कि ये थर्ड केस LSM में क्यों अलाउ नहीं किया जाता? Anybody? Because in case number 3, actual depth is no doubt greater than limiting depth, but due to this exceeding nature, the strain comes at the steel lower to this value. Strain is lower to this value, and it is violating our assumption number 6. It is violating our assumption number 6. So that's why whenever my XU is greater than XU lim, so overall we cannot make our concrete effective beyond XU lim. So this is the upper limit. So this this margin is not allowed. Anyway, this much concrete will not going to participate, because it is already going to balance area of steel at the limiting condition. So we have to restrict our actual depth to limiting depth only if my XU is greater than XU lim. If my XU is greater than XU lim, we have to restrict XU to XU lim only, because still you can see the stress diagram is going to start from here only, because here, although the actual depth is saying steel concrete is up to here, but it is exceeding the limiting value. तो आप ही खुद ही सोचो ना यार, यहीं पे ही तो सेक्शन आपका फेल हो गया, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको जाने का मौका मिलेगा ही नहीं. ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको जाने का मौका मिलेगा ही नहीं. तो आपका जो सेक्शन है वो यहीं पे फेल हो गया, इधर ही फेल हो गया. So this is not allowed. This is not allowed. So whenever our section is over reinforced, okay, it can come depending upon the quantity of steel, it can come. But whenever we are going to calculate the moment of resistance, at that time we have to keep one thing in mind, that moment of resistance we cannot overestimate, because it is corresponding to the limiting condition. So XU we have to restrict to XU lim, or we can say XU we have to limit to XU lim. That's why the word limiting came here. That's why the word limiting came here.
The XU value is limited to XU limb. It is already limited. It cannot extend beyond this value, and this XU limb value depends upon the grade of steel. Are you getting the point or not? Okay, dear. So this is a comparison. Now the last step is to calculate moment of resistance. So moment of resistance is nothing. It is a compressive force into lever arm, or you can say it is the tensile force into lever arm. So compressive force into lever arm, we know how much it is. It is 0.36 FCKB into XU, and lever arm is D minus Y bar, means 0.42 of XU, and similarly it is 0.87 Fy into AST. Lever arm, you again know it is D minus 0.42 of XU. हाँ, फेल पहली हो जाएगा ना, फेल पहली हो जाएगा. गुड अमित, ये तो यही फेल हो गया, ये आगे जाएगा नहीं. ये तो ठीक है, स्टील आपने ज्यादा प्रोवाइड कर दिया इसलिए स्ट्रेन डायग्राम कम आ गया ये, बट एट द टाइम ऑफ कोलैप्स ये फेल तो यही हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? एंड in fact area of steel will also be restricted up to AST limb. This area of steel is more, but in actual condition only that portion of area steel will be consumed which is going to balance this zone, not this zone. Okay. So this is the case. It is overall depth, it is area of steel, it is effective depth, it is actual depth of neutral axis, it is parabolic, it is rectangular. So this is, you can say, compressive force, tensile force, it is lever arm. The moment of resistance is how much? It is a compressive force into lever arm, it is tensile force into lever arm. Okay. So 0.36 FCK BXU to D minus 0.42 XU. इसलिए पहले स्ट्रेस ब्लॉक पढ़ाया मैंने आपको, ताकि ये सब दुविधाएं खत्म हो जाए. अगर स्ट्रेस ब्लॉक वाला यूनिट आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर लेक्चर नंबर 7 आपने अच्छे से देखा है, तो आज का लेक्चर में आपको लगेगा कि सर बस एक ही चीज आपने नहीं बताई, दो चीज इनफैक्ट, कंपैरिजन और एक्सियल लिम्ब. हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, how to calculate moment of resistance is already known to you because you have already studied a stress block. Okay, dear? So this is a way to calculate moment of resistance. But yes, you guys can keep one thing in mind. No doubt mu is 0. This one, this is valid for under reinforced section and limiting section. चलो अंडर ही लिख लो, ठीक है. अगर लिमिटिंग सेक्शन हो, then what are the alteration? Here you have to use axial limb, here also you have to use axial limb. ठीक है, लिख देता हूँ यार मैं. Zero 0.36 FCK B into XU limb ठीक है. Got it? This when it is limiting section. अच्छा, over reinforced section, as we know, it is not allowed. If it is a case of over reinforced section, still moment of resistance is restricted to mu limb as XU is limiting to mu limb. But in this case, you only have to use this side formula.
You cannot use tension side formula. If XU is greater than XU lim, means it is over reinforced section, then you have to use this. And this limiting section is what? If XU is equal to XU lim, and this URS is what? Under reinforced section when XU is less than. In over reinforced section, please do remember only one side formula is valid. You know why? Why? Because in tension side area of steel, you have overestimated steel. You have given the actual amount of steel, but the thing is, ये जो steel है ये आपको उतना ही लेना है corresponding to this value. It has to be corresponding to this value. और ये वाला स्टील आपका यहाँ तक है. ये वाला स्टील आपका काले के साथ साथ इस लाल को भी क्वांटिफाई अकाउंट कर रहा है. But the thing is, you are restricted to limiting only. So if you want to use tension side formula, then first of all you have to calculate AST limiting. Then you can use tension side formula. So better not to go for tension side formula whenever the section is over reinforced. Simply restrict XU limiting to XU lim and place it on compressive side formula, and you will be getting the exact moment of resistance. So this is the correct way of calculating limiting moment of resistance or moment of resistance in your over reinforced section. Tell me if it is clear to you or not. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए डियर. यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए यहाँ तक. एनीबडी? तो ये मैंने आपको कराया आज 4 स्टेप्स. ठीक है. अगर मैं क्विकली इन सबको रिवाइज कराऊँ आपको, then dear, what all things we have discussed today. First step, limiting depth of neutral axis XU lim is equal to 700 upon 1100 plus 0.87 Fy into D. And for critical 3 grades, for common 3 grades, this is the value 0.53, 0.48 and 0.46 D. And this value depends upon grade of steel only. Second is XU is equal to 2.42 Fy upon FCK P dash into D, or 0.36 FCK B into XU is equal to 0.87 Fy into AST. Third is comparison. Comparison में मैंने आपको बताया under, limiting and over reinforced section. ठीक है. ओवर में थोड़ा सा बस घपला हो जाता है. ध्यान रखना कि XU अगर XU लिम से बड़ा हो तो फेलियर इससे पहले हो जाएगा. एंड इट इज ऑल्सो वायलेटिंग assumption number 6. So XU we have to keep restricting to XU lim. Okay. And finally we have calculated moment of resistance. और moment of resistance भी सिर्फ over reinforced section में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि सिर्फ compressive side formula से यूज करना है. And we have to restrict our XU limiting to XU lim. अच्छा, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा. ये न्यूमेरिकल सब करके मुझे बताएंगे. Although I am going to take a dedicated numerical session tomorrow, but still you guys can tell me, you guys can solve this numerical. ये थोड़ा बताइए जरा आप लोग. चलो चलो, शुक्र है मज़ा तो आया. मज़े भी अकेले ही लेते हो, नहीं कि 4 बंदों में शेयर कर दो. सिंपल सा क्वेश्चन दिया है बहुत ही. एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है. अच्छा, ऑलरेडी आपको दे रखा है लिमिटिंग निकालना है. लिमिटिंग ठीक है. तो एरिया ऑफ स्टील नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑलरेडी दे आर आस्किंग इट एट लिमिटिंग कंडीशन. तो 150 mm ये हो गया. इफेक्टिव दे रखा है आपको कितना? 330.
is area of steel. Yeah. This is 330. एक्सियोलिम लिमिटिंग पूछा है तो एक्सियोलिम निकालेंगे सीधा हम लोग भी. For Fe415, व्हाट इज एक्सियोलिम? क्या हो जाएगा एक्सियोलिम Fe415 के लिए? ये हो जाएगा 0.48 टाइम्स ऑफ डी. 0.48 टाइम्स ऑफ डी, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया ये? 150, 8.4. ठीक है. So first of all I have calculated axiolim. It is 0.48 D for Fe415. Yes, Dikshu. So axiolim is 158.4. Now what next? अब क्या करोगे आप? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल दो भाई, सीधा फॉर्मूला है. एक्चुअल का पंगा ही नहीं, ना एरिया ऑफ स्टील दे रखा है और सामने वाला भी सिर्फ लिमिटिंग में इंटरेस्टेड है. तो व्हाट टू यूज नाउ? सिंपली यू कैन राइट mu lim is equal to 0.36 FCK P into XU into D minus 0.42 of XU. बस खत्म. 0.36 FCK, how much to use here? यहाँ पे कितना FCK यूज करोगे? यहाँ पे यूज करोगे 20 MPa. 20 यूनिट को लिखूंगा न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. इनटू b कितना हो गया? 150 mm. इट इज 150 इंटू mm. ठीक है. इनटू एक्सियोलिम कितना हो जाएगा? एक्सियोलिम हो गया 158.4. एक्सियोलिम हो गया 158.4 mm. ओके. इनटू डी कितना हो गया? 330 माइनस 0.42. What is axiolim? 158.4 mm. So you can see that mm common log mm square. So final answer will come in Newton mm. And what is the value dear? Tell me what is the value? कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 0.36 इंटू 20 इंटू 150 इंटू 158.4 इंटू 330 माइनस 50,990,842. चेक कर लेना न्यूटन mm. चेक कर लेना एक बार डियर. चेक कर लेना. इतना ही आ रहा है क्या? और दिस इज इन न्यूटन mm. तो 1 2 3 4 5 6, तो 50.99. न्यूटन को किलो न्यूटन 1000 से डिवाइड किया, mm को मीटर 1000 से डिवाइड किया, और you can say it is nearly 51 kilo Newton meter. So limiting moment of resistance here is how much? Limiting moment of resistance is how much? It is 51 kilo Newton. चेक करना एक बार. देवेंद्र, दीक्षांत, कितना ही आ रहा है? Tell me.
बताइए, इतना ही आ रहा है क्या? हाँ, इतना नहीं आ रहा यार। 45 07 26 81 1 2 3 4 5 45.0। कितना आ रहा है? 45.07 आ रहा है। 45.07 आ रहा है, हाँ, यस। 45 आ रहा है। गुड गुड दीक्षांत, गुड देवेंद्र, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन हटा दिए, सही फंस गया। चलो कोई नहीं। तो एनालिसिस, स्ट्रेस ब्लॉक, गुड क्वेश्चंस फ्रॉम गेट ईएससी आई एम गोइंग टू टेक टुमारो। और कल का क्लास होगा अपना, यस गुड यांजिन, कल का क्लास होगा अपना वही 6 बजे। तो टुमारो, आज संडे था इसलिए 7 बजे मैंने क्लास रख लिया और 5 बजे क्लास रख लिया। एंड एक्चुअली ये बैकअप था कल की क्लास का, तो कल की क्लास मैंने ली नहीं थी ना। ओके, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू कम हेयर एट 6। ओके, एंड आपने शायद ग्रुप पे देख ही लिया होगा कि आई हैव ए न्यूज़ फॉर यू। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो डियर यस, so from tomorrow onwards we are going to start highway engineering। ठीक है, तो कल मंडे है और टाइमिंग रहेगा इसका 4 PM। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? 4 PM रहेगा। और कल मेरा क्लास होगा अपना 6 बजे। 6 बजे कल मेरा क्लास होगा 6 PM पे। एंड इट इज़ न्यूमेरिकल सेशन 2, बेसिकली न्यूमेरिकल ऑन स्ट्रेस ब्लॉक, LSM इंट्रो, ठीक है, एंड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, एंड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, एंड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, क्लियर है डियर? तो कोई नहीं, कल मिलते हैं फिर से 4 बजे हाईवे के लिए, और 6 बजे मिलेंगे हम लोग RCC के न्यूमेरिकल से, है ना? चलिए डियर, तो नया बैच अपना अब अगला SSC JE का आएगा 17 मार्च को एनवायरनमेंट में। 3 मार्च वाला बैच हमने अभी स्ट्रक्चर चालू किया है, स्ट्रक्चर्स। और गेट का वीकेंड बैच भी स्टार्ट हो रहा है डियर कमिंग वीक में, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज गोइंग टू कवर इन दैट। ठीक है, तो जो भी लोग ट्राई सिटी के आसपास रहते हो और जो हमारी ऑफलाइन बैचेस एंजॉय करना चाहते हैं, दे कैन विजिट आवर कैंपस, और एड्रेस वगैरह मैंने आपको दे रखा है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो मेक ए कॉल ऑन दिस नंबर। इज इट क्लियर? तो feel free to join this telegram channel for the daily notes, upcoming lecture notifications, doubt clearing sessions। okay, and dear, कोई भी फीडबैक हो आपको क्लासेस के रिलेटेड, कंटेंट को रिलेटेड, या कुछ अगर आप सजेशंस देना चाहते हो, देन यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स और ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मैं इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूँगा। और इससे पहले मैंने आज एक सेशन और लिया है विच इज़ बेसिक टूल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जिनको लगता है कि बेसिक्स में भी कई चीज़ें गड़बड़ है, तो उसमें से अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक देख करके वीडियो देख लिया कीजिए। आज ऑल्दो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर किया है, ठीक है, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अदरवाइज आई विल प्लान सम टॉपिक बाय माय ओन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,
Have a great evening ahead. Bye bye. Take care.